तो मुझसे एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है ये सवाल कि हम किस तरीके से अपनी एसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या ऐसा लिखें कि हमारे मार्क्स इम्प्रूव हों। देखिए, सवाल में क्या ऐसा लिखें, what are we supposed to write? So what are you supposed to write? Problem number one is, what are you supposed to write? So the answer to this has nothing to do with your writing skills. The answer to this depends upon the content. So okay, fine, then you have the content. So you need to see कि content हम कहाँ से absorb करें, कहाँ से consume करें. उसके लिए simple notes पढ़ने से, basic notes पढ़ने से काम नहीं चलेगा, right? So because this is not O level exam, this is an A level exam. तो मेरी आपको recommendation यही है कि A levels में excel करने के लिए you need to dig deep, take a deep dive into different books, have multiple source of books, not just one book, at least 2 books से आप पढ़ें, एक ही topic को 2 books से पढ़ें, हर टॉपिक को नहीं बट कुछ टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उनको एटलीस्ट आप 2 बुक्स से पढ़ें ताकि आपकी उसमें एनालिसिस देखें, एनालिसिस इंप्रूव होगी. सो स्टूडेंट्स के मार्क्स जो कम आ रहे होते हैं वो इसलिए आ रहे होते हैं बिकॉज उनको बेसिक नॉलेज तो होती है बट वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. When you say that you need to express it, you need to touch upon the element of how and why is this happening or how is this happening, right? So for that you need to sort of focus on how to improve your analytical and your critical thinking and your evaluation skills. तो ये आपका basically writing skills का part है, analytical skills, critical thinking skills, evaluation skills. ये कैसे इंप्रूव होंगी? आपकी रीडिंग से इंप्रूव होंगी. रीडिंग क्या करनी है? रीडिंग आपने इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना है और जिस स्टाइल में इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स ने लिखा हुआ है ना, उस राइटिंग स्टाइल को आपने बेसिकली कॉम्प्रिहेंड करके उसको अंडरस्टैंड करके एंड देन यू नीड टू रिफ्लेक्ट इट इन योर आंसर, right? Only then you will be able to improve your writing style. So let's say if you're talking about, in AS, you're talking about elasticity, that why is elasticity so relevant? Let's say, why is elasticity of demand so relevant for maybe the firms or the government? So probably a lot of students might start off their answer by saying elasticity of demand is defined as, that's a very common way to, start your answer. But a better way to start your answer could be for this question specifically, where they're talking about the importance, you could start off by saying that the knowledge of PED provides useful insights to different economic agents in society in making key economic decisions. So now what you have done is that you have played around the words. There's no gap. अब ये जो चीज़ है ना, ये फौरन नहीं आ जाती, ये पढ़ने से आती है. अब बार बार एक चीज़ को, जब आप इकोनॉमिक्स का लिटरेचर पढ़ते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स का लिटरेचर पढ़ के what really happens is that you form कनेक्शंस इन योर ब्रेन. आप अपने ब्रेन में कनेक्शंस फॉर्म करते हो और वो कनेक्शंस आपको हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से समझाने में और एक्सप्रेस करने में. जब आपने एक चीज़ को एक दिन पहले बैठ के पढ़ा होगा, लिटरली एक दिन पहले बैठ के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, सही है? सो आप उस टॉपिक को समझ तो लोगे, लेकिन उस टॉपिक को समझना डज नॉट रियली मीन्स कि उस टॉपिक को फिर आप एग्जाम में भी बेहतर तरीके से उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे. इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है. एक टॉपिक को समझ लेना और फिर उसको इस तरह से समझना कि आप इसकी एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से करेंगे. ये इट्स नॉट, एवरीवन कैन नॉट डू दैट. सम पीपल कैन हु हैव वेरी गुड राइटिंग पावर बट सम कैन नॉट. सो द की अगेन यू बी बैक टू स्क्वायर वन, हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स. और हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स तो सिंपल, आप लिख रहे हैं ना, लेकिन लिखने से पहले वो सेंटेंस तो ब्रेन में फॉर्म होता है आपके. सो ब्रेन में सेंटेंस कब फॉर्म होगा? जब ब्रेन एक्सेस करेगा उस सेंटेंस को. उसको एक्सेस करने के लिए ब्रेन के पास कोई डेटाबेस होनी चाहिए ना. उस डेटाबेस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, खाली नोट्स से नहीं, खाली क्लासेस अटेंड करके नहीं. इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स में जाना पड़ेगा, ठीक है? जब आप उसकी टेक्स्ट बुक्स में जाते हैं तो आप इकोनॉमिक्स के लिटरेचर को एक्सेस करते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छा इसकी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके फाइन, इसकी ये एक्सप्लेनेशंस हैं, ओके फाइन. तो अगर लेट्स से मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैक्सिमम प्राइसेस ऑन लेट्स से कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट. उसकी रीजंस फिर आप उसके डेप्थ में, एनालिसिस में, देन उसी की इवैल्यूएशन में, देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर ऑन द इंटरनेट एज वेल. भरा हुआ लिटरेचर, you go there, you research, you search different topics, you will get a lot of answers, right? So I would definitely recommend that one way in order to improve your writing skills is that you research, and research is a very important thing. A lot of students and honestly Pakistan mein, because I'm making this video from Pakistan, and honestly in my country the concept of research, that students actually going on the internet trying to research a topic and figuring it out for themselves is honestly very underrated. And
such a concept is really missing in our learners, right? So ये एक ऐसा एरिया है जो अगर आप इसको cater कर लें, counter कर लें, nail कर लें, तो definitely आपके automatically बड़ा improve हो जाएगा. So अभी फ़िलहाल के लिए आई एम थिंकिंग कि मैं एक ऐसी सीरीज़ बनाऊँ इसमें मैं आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करूँ, पर प्रॉब्ली शायद एक एंटायर वीडियो मैं सिर्फ डेडिकेट करूँ व्हाट although मैंने एक वीडियो बनाई हुई है on the assessment objectives, it's there in my playlist, but probably I can sort of dedicate a video entirely on what analysis is, probably dig deeper into what analysis is, probably dig deeper into what evaluation is, right, how to conclude your answers. दूसरा ये कि answers को ना कभी भी don't write like that the government should not, in my opinion, the government should not impose, let's say, indirect taxes, or in my opinion, the government should not, implement subsidies. I think that indirect taxes would result in a complete failure, or they are harmful, or they would result in harmful consequences. ये नहीं लिखें आप. In my opinion, I think that नहीं लिखना. Don't give an abrupt statement कि indirect taxes are harmful or indirect taxes are bad, because indirect taxes or subsidies could be bad and could be good as well. Maybe at one time they are bad, at one time they are good. It depends upon a lot of this factors जो evaluation का part आपका बनेगा, right? And so, for example, if you want to end an answer, you could possibly say, instead of saying indirect taxes are bad, you could possibly say, अब यही writing style है और यही writing, or this is actually what your writing skills का part, or this actually forms part of your writing skills, that you instead of saying that indirect taxes should not be imposed or would result into damages, you could say that the assertion that indirect taxes may result into or should not be imposed could be true or may be true, especially if the argument for, let's say, the black markets and the argument for the resulting deadweight losses and the argument of unintended consequences that the indirect taxes may cause may be enough in some economies, and in fact the argument for indirect taxes being regressive and causing income inequalities may be enough to conclude that indirect taxes may result into harmful consequences and probably should not be imposed, right? But then we're not saying entirely that they should not be imposed. What we are saying is that these arguments could possibly enough. We're not saying that they are enough. We're saying that they could possibly be enough if these factors are present. So for example, the fact that black markets could arise, and the fact that these taxes are regressive in nature, and the income inequality factor, especially for a country that is already struggling with massive income inequality and, let's say, poverty, especially for a poor country like Pakistan. So probably for a poor country like Pakistan, or for a country that is coming from a poor background or a developing economy with very low GDP per capita and high levels of absolute and relative poverties, indirect taxes may result into unintended consequences, right? And the assertion that indirect taxes are harmful may seem to be true to an extent. So ये आपका writing, this is what writing skills are. So having that critical thinking skill, evaluation, that is in you're critiquing the argument, right? And I think all those students who मेरी video देख रहे हैं, they should definitely go to my YouTube playlist which says all you need to know. And उसमें assessment objectives को मैंने काफ़ी depth में explain किया है. I think you should definitely go and watch that video. So I think that's it for now. Video काफ़ी लंबी हो रही है. I'll see you all in part 2. Until then, take care.